ICS. My name is Trija Garg and I am your economy faculty. Today we will be understanding a very basic concept, but it is still very confusing, and that is known as national income. Let us first understand what do you mean by national income. When I say national income, our economist, the father of modern economics, Adam Smith, he defined the wealth of nations in 1776 in his work An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. तो एडम स्मिथ ने एक नया डेफिनेशन दिया था वेल्थ को. पहले क्या होता था, द कंट्री विच हैज मोर एंड मोर ऑफ ग्रेन्स यू कैन से, और दे हैव मोर ऑफ गोल्ड रिजर्व्स एटसेट्रा, वाज कंसिडर्ड अ वेल्दी नेशन. लेकिन अब एडम स्मिथ आए, उन्होंने बोला नहीं, जैसे ही हम इन रिसोर्सेज को यूज करेंगे बेसिकली, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना है, एंड द प्रोडक्शन का वैल्यू जितना होगा इन 1 ईयर, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द नेशनल वेल्थ. सो वी कैन से that the nation's wealth is value of final goods and services produced within the country in a year. Let us first understand national income. When I say value, I'm talking about the monetary value. It means the goods have been exchanged for money. Okay, when I say final goods and services, then final means two types of goods. We have capital goods, which are used in the production or seedha for sale, and we have consumer goods. So these are final goods, which require no more production, no more processing is required. Those are known as final goods. Produced within the country. When I say within the country, I am talking about the domestic territory. When I say domestic territory, I mean the geographical boundary and 12 nautical miles. Okay? When I say in a year, this means 12 months. 12 months means our financial year, which is from April to March. 1st April to 31st March. So value of final goods and services produced within the country in a year is known as the national income. Okay, तो हम ये कैसे पता लगाते हैं? You know that there are 3 methods to find this out. लेकिन पहले हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है. Let us understand the 4 terms today: GDP, NDP, NNP and GNP. All 4 are national income. All 4. Okay, there is only difference between the 4. अब हम difference को जानते हैं. When I say GDP, it is gross domestic product. Now here gross means total, domestic means domestic territory, that is the geographical boundary of India, plus 12 nautical miles. Product means goods and services both. जब हम डोमेस्टिक के बारे में बात करते हैं, डोमेस्टिक का मतलब ये होता है, इफ देयर इज अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, लेट्स से कोई कार की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, एंड दैट कार कंपनी इज प्रोड्यूसिंग इन आवर कंट्री, ठीक है, यानी कि हम लेके चलते हैं दो, एक इंडियन कार कंपनी है और एक फॉरेन कार कंपनी है, ठीक है, और दोनों जो है वो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों हमारे जीडीपी में इंक्लूड होंगे. Why? Because the manufacturing is being done in the domestic territory of our country. तो दोनों include होंगे ना GDP. लेकिन when we talk about GNP, what is the difference here? D और N का difference है, यानी कि कुछ हमें change करना पड़ेगा. तो GNP पे जाने के लिए what we will do is GDP plus NFIA. NFIA actual में means net factor income from abroad. इसका मतलब ये होता है कि जितने लोग people from our country, if they are going out to another country and earning money, we will add that and we will subtract people who are coming to our country and earning money. Means foreigners income we will subtract, and our citizens, the income of our citizens, even if they are earning outside of the country, we will add that. तो अब ये बन जाएगा national. National का मतलब we are talking about our citizens.
सो चाहे वो इंडिया में कमा रहे हैं या बाहर कमा रहे हैं, हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. एंड द पीपल हु आर इन इंडिया बट नॉट इंडियन सिटीजन, इफ दे अर्निंग हियर, देन व्हाट विल हैपन, हम उनका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज GNP एंड द ओनली डिफरेंस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. देन इफ यू वांट टू गो फ्रॉम GNP टू NNP, व्हाट इज द डिफरेंस? G से N पे जाने के लिए वी विल डू GNP माइनस depreciation. What do you mean by depreciation? The wear and tear of the basically capital good. For example, you know that there is a machine. अब मशीन का हम क्या करते हैं, हमने 20,000 का मशीन खरीदा, we added it into our asset because it will be used to produce goods and services. लेकिन हमें 20,000 की जो कॉस्ट होती है, हम इसको उसकी लाइफ में स्प्रेड कर देते हैं. Let's say this machine's life is 20 years. Okay, so this 20,000 will be, the cost of 20,000 will be spread in 20 years. ठीक है, तो हर साल सिर्फ 1,000 रुपए एज अ कॉस्ट ऐड करे जाएंगे. दिस इज जस्ट एन अकाउंटिंग मेथड, वी आर नॉट एक्चुअली इनकरिंग दिस एक्सपेंस. तो हम प्योरिटी के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन रेट माइनस कर देते हैं, क्योंकि हर साल इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और वो इतना नहीं स्पेंड कर पाएगा, इतना नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, इसीलिए. तो दिस इज योर डेप्रिसिएशन. एंड फ्रॉम GDP टू NDP आने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी विल subtract depreciation. So there are two things that you need to remember. From coming from gross to net domestic product, we subtract depreciation. अगर NDP से GDP पे जाएंगे, from net to gross we will add depreciation. So gross means total, net means adjusted for depreciation. Similarly, if you want to come from GDP to GNP, we will add NFIA. If from GNP to GDP, we will subtract NFIA. So these are your 4 terms. Now you must have heard of the purest form of national income. What is the purest form of national income? I will say the purest form of national income is NNP at factor cost. It is the purest. क्यों? क्योंकि इसमें depreciation has been adjusted, NFIA has been adjusted, okay, and it is at factor cost, the starting cost. If you remember the actual cost of production that the producers incur, we discussed this in the yesterday's lecture. So this is the purest form of national income, and that is why it is also written as NI. Using expenditure method, we find out GDP at MP for our country, okay. GNP is used for international comparisons. Why don't we use NNP for international comparisons? Because every country has a different rate of depreciation. तो हम उसको compare नहीं कर पाएंगे. We will not be able to compare it. तो हम क्या करेंगे? GNP internationally use होता है क्योंकि इसमें depreciation adjusted नहीं है, तो कोई problem नहीं होगा compare करने के लिए. और GDP अपनी country को compare करने के लिए हम use करते हैं. अपनी country में ही हम GDP देखते हैं कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है. Okay, so that is GDP MP using expenditure method. NNP at FC. We have the purest form of national income. GNP is the use for basically international comparisons by World Bank and IMF, and this is also known as GNI. Okay, capital. I hope this is clear. These are 4 types of national income that you must know about. Know about NFIA. NFIA में क्या क्या चीजें आती हैं? Basically the money that they are earning. It could be a company earning. It could be individual earning money outside of a country. Okay, वो सारी चीजें आती हैं इसमें. Depreciation हो गया हमारा और हमारा gross domestic product हो गया. I hope now you will not forget the difference between GDP, NDP, NNP and GNP. Thank you so much.